Very good morning, children. Welcome back to part 1 video of chapter 2 physics, class 11. So the chapter 2 is units and measurements. So the name itself has two parts. The first part is unit and the second part is measurement. So we will be learning about few fundamental units of measurements, and then we will learn about what are the errors which could happen in measurement, how can you measure long distances, and mass and time, what are the units over there, and then we'll be dealing with errors in measurements. But before that, so that is the second part. Measurement is the second part of this video. The second part of this chapter, whereas the first part of the chapter is units. So let's discuss on units. So any physical entity which can be used to measure a physical quantity can be called as a unit. And there are something called fundamental units. And derived units. So what is the difference between this fundamental unit and derived unit? So in fundamental unit means a unit which can be expressed, which cannot be expressed in terms of other physical quantities. Or I should say the fundamental units are actually the units of fundamental quantities, and then we have to say which are fundamental quantities. And fundamental quantities are those quantities which cannot be expressed in terms of other physical quantities. It does not depend on other physical quantities. For example, mass, length, and time. These are the major three fundamental quantities. So according to the systems that is prevailing, like CGS system, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, डेरिवेटिव यूनिट्स बाद में देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम है. और इसमें ये तीन जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में सिर्फ मास, लेंथ एंड टाइम को लिया गया है. Because mass has nothing to do with any other physical quantity. Mass of the substance is its mass itself. In the same way, the length of the substance is length, and time, which we calculate in seconds, minutes, hours, days, and years. So these are the three major fundamental quantities, especially when we consider this system. What is CGS system? CGS में C for centimeter, mass mg for gram, and second, time के लिए second. Time के लिए second, यानी time का जो fundamental unit है, so time is a fundamental quantity and second is a fundamental unit of time. Length is a fundamental quantity and centimeter is a fundamental unit of length, and mass is a fundamental quantity, and gram is a fundamental unit of mass. So see, that is CGS system. Mass is measured in grams and length is measured in centimeters and time is measured in seconds. Then FPS system. What is FPS system? It is feet, pound, and second. Again, field is
is the measurement of length, pound is the measurement of weight, and second is the measurement of time. In foreign countries like France it was used, and even feet is used even nowadays. Even feet is used even in India, है ना? Even commercial जो length है वो feet में ही बोलते हैं, मीटर में बोलते नहीं है. और MK system, M for meter, K for kilogram, and S for second. So this is an important system: meter, kilogram, and second. So meter is actually the unit of mass, and unit of length, and kilogram is the unit of mass, and second is the unit of time. So length, mass, and time. And now SI system, which is also called as system internationale. So system internationale means international system of units. So it is a worldwide accepted system of unit, and ये MKSC है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ fundamental units और है. So SI system of unit does not have only these three, it also has some other 4 more quantities. So mass, length, and time, MLT, is already there, but we have few more physical quantities like temperature. So I am going to write here the SI system of unit, right? So these all things are very clearly written in your textbook, so you can even read through these units. So I am going to explain few things which are very important. So international system, या SI system of unit. So in the SI system there are 7 fundamental quantities. Fundamental quantities. And then they are measured in some units called fundamental units, and their symbol and the symbol of their dimension. So fundamental quantities, number 1 is again mass, physical quantity. Length is another physical quantity, and time, temperature, and electric current, luminous intensity, amount of substance. So 7th one is amount of substance. So number 1 is mass. Mass is measured in kilogram. Kilogram is kg, it's written like this. Length is measured in meter, m. Time is measured in seconds, the basic unit is second. Temperature is measured in Kelvin. Electric current is measured in amperes. And luminous intensity is measured in cantilla, CV.
And there is one more thing which we already know in chemistry, you have learned it, amount of substance. Amount of substance is measured in moles. 1 mole of substance. So 1 mole of substance में Avogadro number of particle होती है. Avogadro number of particle you already know 6.022 into 10 की power 24 particles. So Avogadro number of particles जिसमें होता है उसको हम 1 mole of substance बोलते हैं. So it is already given in your textbook, and there is a table given SI base quantities and units करके दे रखी है. और जो लास्ट क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज मेजर्ड इन मोल और उसका सिंबल है MOL. ओके, so this there are definitions given for these 7 fundamental quantities. So these are the definitions actually which came by, which are the accurate definitions, I should say, which are the accurate definitions which came by some scientific experiments, outcome of scientific experiments. And isko read a definition. If you read a definition, you will not be able to understand what it is actually meaning like, but for the accuracy the definitions are given there. So the main thing that you have to understand here, that there are 7 physical fundamental quantities actually, and there are 2 more quantities which are actually called as supplementary units, so which we will be discussing later, the supplementary units. So when we will be discussing about when we will be discussing about the next measurement part, and we will be discussing about the supplementary units. So anyway, there are 2 supplementary units, and the first supplementary unit is angle, that is a plane angle, that which we already know in degrees, but a degree is not SI unit. SI unit is radian. And then there is something called solid angle and 3-dimensional angle, and the 3-dimensional angle is measured in steradian. So these are the 2 supplementary units. So other than these 7 fundamental units, there are 2 more units which are called actually supplementary units, and the supplementary units do not have any dimension. It is dimensionless, and we will be talking about what do you mean by dimensionless and all, and later. So let's learn about the dimensions of these units. Mass का dimension क्या होता है? Mass को हम लिखते हैं m. Like this you can write. When you write dimension, you can write it in square bracket, and length you can write in square bracket like this. Time, the dimension को t लिखते हैं MLC, and temperature is K, ampere is A, and CD, and for mole MOL square bracket. So out of which we will be discussing only this 3 fundamental units which are MLT. Okay, so there are 7 fundamental units anyway, but in this chapter we are going to discuss majorly on 3 fundamental units: mass, length and time. Because NCERT is dealing with only these 3. So ये फंडामेंटल यूनिट के डिमेंशन है, लेकिन अगर आप डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, है ना, व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? लेट्स सी व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स. सो डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो ये होता क्या है डिराइव्ड यूनिट्स? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वेलोसिटी, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वेलोसिटी. Displacement upon time. So displacement को हम, displacement is actually the length, मीटर में नापते हैं. तो मीटर में नापते हैं तो उसका डिमेंशन आएगा L, और टाइम डिवाइड में आ गया. So you can write it like this: LT minus 1. So this is a dimensional formula for velocity. V is equal to, dimension of V is equal to
स्क्वायर ब्रैकेट LT minus 1. So अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट यू मीन बाय डायमेंशन, dimensions are, the powers to which dimensions of a physical quantity is the powers to fundamental quantity which represents that particular physical quantity. So यहाँ पर velocity physical quantity है, लेकिन उसकी dimension क्या है, fundamental quantities का powers में यहाँ पर. So आप इवन यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m का पावर तो 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है. So this is a dimensional formula for velocity. So dimension of velocity. So जब आप velocity का dimension पूछ रहा है या कोई भी derived units का dimension पूछ रहा है, so what are you actually doing is you are representing it in terms of fundamental quantities or fundamental units. So fundamental units की हिसाब से अगर आप उसको represent करना चाहते हैं, then that is called the dimension of that particular unit या particular quantity. So velocity का dimension आ गया. इसी तरह और भी derived units है क्योंकि velocity is derived from distance and time. And acceleration is velocity upon time. Force we can write mass into acceleration. F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. So there are so many dimensions here. So I'm going to write few dimensions and you can look into the last appendix of this first book, and there are some dimensions already given which you have to by heart. So in page number appendix A9, so A9, 214, 215 and 216 and 217 and 218 means 214 to 218. इन सब पेजेस में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज और हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का डिमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है. जैसे एरिया का दे रखा है, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेन, modulus of elasticity, surface tension, surface energy, velocity gradient, pressure energy, coefficient of viscosity, angle को dimensionless है, trigonometry ratio, sine, cos, tan, ये सब dimensionless है, angular velocity, angular acceleration, radius of gyration, moment of inertia. So there are so many means 94 dimensions are there. So at a short all this 94 you can't learn anyway. तो हम यहाँ पे बेसिक 3 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं और ये बेसिक 3 क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करने वाला यहाँ पर 45 डिमेंशंस है. ओके, सो ये बेसिक 3 क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करने वाला ये 45 डिमेंशंस हम यहाँ पर डील करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 214 एंड 215, इसमें 45 डिमेंशंस जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, you have to by heart this formulas. Okay, so you have to by heart the formula. ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, या आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. Okay, so I'm writing few formulas here. Deriving units का dimensional formula. So suppose force, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन का भी निकालते हैं. एक्सेलरेशन होता है, सो वेलोसिटी का मैंने बता दिया आपको, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी और स्पीड दोनों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट विल बी लाइक मीटर पर सेकंड. सो यू कैन राइट इट फॉर मीटर इट इज लेंथ, सेकंड इज टाइम, so LT minus 1.
शॉर्ट फॉर्म में, और लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो डिमेंशनल फॉर्मूला के रूप में प्रॉपर तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का डिमेंशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड है और ये अपॉन सेकेंड, इसका मतलब है ऑलरेडी ये LT-1 है, जिसमें एक और t आ गया तो इट विल बी लाइक m0L1t-2, दैट इज अ डिमेंशन। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास का है m1 और एक्सेलरेशन का m0L1t-2 है। So you are getting the total value to be m1L1t-2. So that is a force. We can write pressure. Pressure is force divided by area. So pressure का जो dimension होगी फोर्स का m1L1t-2 है डिवाइडेड बाय एरिया का L स्क्वायर। सो फोर्स का जो डायमेंशन होगा यू आर गेटिंग हियर m1L-1t-2। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एंड डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है तो वर्क और एनर्जी दोनों का सेम है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का तो ऑलरेडी आपको पता है m1L1t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L1। सो एनर्जी का जो या वर्क का जो डिमेंशन आएगी m1L2t-2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एंड सो देयर आर मेनी मोर। सो हम बेसिकली सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा है, विच इज एक्चुअली मास, लेंथ एंड टाइम। सो ये सिर्फ मैंने 5 क्वांटिटीज के बारे में बताया है ना। देयर आर 45 फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू हैव टू बाय हेड, है ना। उन सब का फॉर्मूला दे रखा है और उन सब का फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। वैसे फॉर्मूला लर्न करना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद फिजिक्स ओनली, क्योंकि आप ये पूरा 15-16 चैप्टर्स पढ़ेंगे तब जाके ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होगा, है ना। इवन 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में आने वाले सारे फॉर्मूला इसमें इंक्लूड करा गया है। लेकिन 12th क्लास का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है बिकॉज 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है विच विल बी द 4th फिजिकल क्वांटिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ये सब, और ये सब हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहा। सो वी आर यूजिंग ओनली लिमिटेड 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। सो लेट्स गो विथ dimensional analysis. That is a major topic in this chapter, dimensional analysis. So units जो है, units से related पहला या मेजर टॉपिक जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो है dimensional analysis. And its application. So dimension of a physical quantity you have to by heart. Unless you by heart the physical quantity, you know the dimension of the quantity, you cannot do these questions anyway. So there are 4 applications that I am going to teach this dimensional analysis. There are 4 applications that we are going to learn in this chapter. And the first application is to check the correctness of a formula or an equation which has already been derived through different methods by different scientists.
ओके, सो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल न्यूटन का इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना. सो बहुत सारा फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है. सो ये फॉर्मूला वैलिड है, कितना एक्यूरेट है करके चेक करने के लिए. और दूसरा, टू फाइंड द डिमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज. कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपको पता नहीं है इस इक्वेशन में, तो उसको फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं. या कुछ ऐसा कांस्टेंट आया जिसकी डायमेंशन है ना, कुछ कांस्टेंट ऐसा है जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस, और कुछ कांस्टेंट ऐसा है जिसकी डायमेंशन होती है. सो डायमेंशन वाला कांस्टेंट्स जो है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स भी है. सो डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो है उनकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए, और एक इक्वेशन में कांस्टेंट आ गया, मान लो ए इज अ कांस्टेंट, सो ए का क्या डायमेंशन है, बी इज अनदर कांस्टेंट, बी का क्या डायमेंशन है, P is another constant, P का क्या dimension है, for equation is given. So that will be the second topic you will be learning under this dimensional analysis. And the third topic is to derive a formula. Yeah, to derive a relation. So to derive relation between physical quantities. Suppose there is some relation already given that this physical quantity depends on few other physical quantities. Then derive a relation between them. So आप formula derive कर सकते हैं using this dimensional analysis. And the fourth is to convert one unit, system of unit, to another system of unit. So एक system of unit से दूसरा system of unit में कन्वर्ट करने के लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस, वैसे आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से बहुत ज़्यादा इजी कन्वर्शन होती है. अगर फंडामेंटल यूनिट है तो उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत नहीं है. लेकिन डिराइव यूनिट में उसमें फंडामेंटल यूनिट का अलग अलग पावर होने की वजह से m की पावर 1 हो सकता है, l की पावर 2 हो सकता है, t की पावर -2 हो सकता है. तो पावर अलग होने की वजह से आपको ये इस डिमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी. सो दैट इज दीज आर द 4 डिफरेंट फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस. So we will be learning now in detail with few examples how we are going to do this all. So number 1 that we are going to learn is to check the correctness of an equation. लेकिन ये सब सीखने से पहले हम एक एक प्रिंसिपल देख लेते हैं, that is homogeneity, principle of homogeneity of equations या of dimensions. So principle of homogeneity of dimensions क्या कहते हैं? Principle of homogeneity of dimension ये कहता है कि अगर आप दो डिमेंशन को ऐड करना चाहते हैं या दो for equation में suppose s is equal to ut plus half it square, this is an equation. तो इसमें ये वाला क्वांटिटी जो भी है डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना. डिमेंशनल एनालिसिस का सबसे इजी एक बड़ा खूबी है कि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को ओबे करते हैं. इट इज ए रैशनल एसआई सिस्टम का एक खूबी है कि इट इज ए रैशनल सिस्टम एक्चुअली, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स सिस्टम, क्योंकि ये 10 के पावर में वैल्यूज लिखने के लिए बढ़ावा देते हैं.
even we write the answers, see, we can write the answers in the powers of 10, 10 to the power 2, 10 to the power 3, whatever. And this system, इसमें homogeneity of dimension ये कहता है कि ये जो x का जो डायमेंशन है वो ut का डायमेंशन होना चाहिए और वो हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, उसके साथ में अगर 3 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो मेरे आंसर क्या मिलेगा? 5 सेंटीमीटर मिलेगा. तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर इज अ डायमेंशन यूनिट ऑफ दिस एंड सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ दिस, है ना. तो ये दोनों यूनिट ऐड होके 5 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट तो सेम आएगा. सो दिस सेंटीमीटर हैज टू बी द सेम ऑफ दिस सेंटीमीटर एंड सेम. लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो यहाँ पर या 2 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो आप इसको 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर लिख नहीं सकता. दैट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे सेम नहीं है. और मोर क्लियरली अगर मैं बताऊं, अगर आप 2 लीटर पानी को 3 सेंटीमीटर लंबा पेंसिल के साथ ऐड करेंगे तो आपको कभी भी 5 लीटर पानी नहीं मिलेगा. You will not get 5 liters of water or you will not get 5 centimeter of pencil. No, 3 सेंटीमीटर का एक पेंसिल और 2 लीटर का एक मिल्क या वाटर को ऐड करेंगे तो इट विल नॉट बिकम 5 लीटर बिकॉज द डायमेंशंस आर नॉट सेम. यहाँ पे लीटर इज एक्चुअली द वॉल्यूम का डायमेंशन है और इसका डायमेंशन हम L3 लिखते हैं वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू L. और ये लेंथ तो कोई खाली L लिखते हैं. तो दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है. सो दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है तो दोनों के यूनिट सेम नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं. क्योंकि अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा. यूनिट को रिप्रेजेंट करने का, है ना, यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना. एंड पावर्स टू विच द फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी का रूप में अपन एक्सप्रेस करते हैं तो वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम नहीं है तो आप उसको ऐड ही नहीं कर सकता, राइट. सो इफ द डायमेंशनल फॉर्मूलास आर नॉट द सेम यू कैन नेवर ऐड. पहले जो मैंने एग्जांपल बताया एक मीटर और सेंटीमीटर, उसको फिर भी ऐड कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, लेकिन ये लीटर का भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं हो. सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होता. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि आप डिफरेंट, सो अगर कोई चीज ऐड होना है तो इट मस्ट बी सेम. जैसे कि आप मैथमेटिक्स में सीखते हैं, यू कैन नॉट ऐड x विद y. यू कैन ऐड 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x, लेकिन यू कैन नॉट ऐड 4x प्लस 7y. यू कैन नॉट ऐड इट, क्योंकि वो 4x प्लस 7y इट विल बी ऑलवेज 4x प्लस 7y. वो आपस में ऐड होके एक नया वैल्यू नहीं बन सकता. बट 4x प्लस 3 बन सकता है 7x बिकॉज दे आर सिमिलर थिंग. इन द सेम वे द सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड. सो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या कहता है? सेम डायमेंशंस को अपन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. फिर उसके जो आंसर आएगा वो भी वही होगा, मतलब उसका भी डायमेंशन वही होगा जो इंडिविजुअल का है. So that is this is a mathematical representation of homogeneity of dimension. The principle of homogeneity of dimension actually. So the principle of homogeneity of dimension says that if two physical quantities to be added, then subtracted, added or subtracted, they must have the same dimension. But for multiplication division, there is no similar or anything. Any physical quantity can be multiplied with एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास अलग क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करते वक्त कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन हैपन ओनली विथ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, और अदरवाइज आई शुड से सिमिलर dimensional formula, same dimensions. So the very first
application that we are learning is to check the correctness of an equation. So you have to say that, you have to check that whether the given equation is dimensionally correct or not. अगर करेक्ट है तो बताना है कि हाँ दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर करेक्ट नहीं है तो बताना है कि दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, दिस इज नॉट ए वैलिड इक्वेशन. और जो भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो एक वैलिड इक्वेशन माना नहीं जाता, वो इक्वेशन एक फेक इक्वेशन होगा, यानी इट शुड नॉट बी ए valid physical equation. Okay, let's go for the formula. We have v square is equal to u square plus 2as. इसको डायमेंशनली वेरीफाई करना है कि इक्वेशन सही है गलत है. सो हम इन सब का इंडिविजुअल का डायमेंशन लेते हैं. v स्क्वायर का डायमेंशन, v का तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो अभी हमने देखा L1 t minus 1 square, so you get L2 t minus 2, that is the dimension of velocity v square here. Dimension of u square here, dimension formula of u square the same, क्योंकि ये भी velocity ही है. v फाइनल वेलोसिटी होता है और u इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल फाइनल होने से उसका डिमेंशन चेंज नहीं होती. और द लास्ट वन 2as, 2as के डायमेंशन, तो 2 is a constant so it is dimensionless. A एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का L1 t minus 2 और S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का L1. सो इसका डिमेंशन आएगी L2 t minus 2. सो नाउ यू सी u स्क्वायर का भी L2 t minus 2, v स्क्वायर का भी L2 t minus 2 और 2as का भी L2 t minus 2. तो therefore dimension of v square is equal to dimension of u square is equal to dimension of 2as. Therefore the equation is dimensionally correct. और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस डायमेंशंस को ओबे कर रहा है, इसलिए therefore the equation is dimensionally correct. So this is how you have to do this question, and let me give you a few more questions. Question number 2. Kinetic energy is equal to half mv square. Yeah, energy is equal to half mv square plus mgh. Okay, so let's see whether the equation is dimensionally correct or not. एनर्जी का यूनिट हमने पहले लर्न कर लिया था, m1L2 t minus 2. That was the unit of energy, और ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टेबल. 45 dimensional formulas है, you have to by heart these all 45 dimensional formulas. तो ये is equal to m1L2 t minus 2 और हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन आएगी. हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मास का तो m1 और वेलोसिटी का L1 t minus 1 का स्क्वायर. So the final answer you are getting is m1L2 t minus 2, again the same dimension. और mgh का डायमेंशन है मास m1, g is acceleration का डायमेंशन L1 t minus 2, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन को, और h is L1. So the final answer you are getting is m1L2 t minus 2 again. So you see all the three dimensions are the same. Then you can write it here, m1L2 t minus 2. You need dimension of E is equal to dimension of half mv square is equal to dimension of mgh. Therefore the equation is dimensionally correct. So another question, third question,
suppose energy is equal to half m v square plus suppose there is a formula like this and you have to check the correctness of the equation. Energy का तो आपको पता है m1 L2 t minus 2, that is a dimension. You have to buy out the dimension. और हाफ एम स्क्वायर में तो हाफ एम स्क्वायर को तो अपन कैलकुलेट करेंगे. हाफ का तो डायमेंशन नहीं है, मास का m1 है और वेलोसिटी का L1 t minus 1, इसको स्क्वायर कर देंगे. So m1 L2 t minus 2, that's the dimension here. And next one is mr omega square. और यहाँ पर m क्या है, मास है, r is the radius, omega is the angular velocity, angular speed. So m का तो m1 है और r का L1 है और omega square, omega is actually 2 pi by t, that's the formula for omega. So second minus 1 है, t minus 1 है omega का dimension. So the final answer you are getting is m1 L1 t minus 1. And what about ma? ma का dimension देखते हैं. ma का dimension है mass into acceleration L1 t minus 2. So the final answer you are getting is m1 L1 t minus 2. So when you look at all these three dimensions, 4 dimensions, m1 L2 t minus 2, m1 L2 t minus 2, these two are same, but this is m1 L1 t minus 1, different. m1 L1 t minus 2, it is also different. So therefore the equation is dimensionally incorrect. The equation is dimensionally incorrect. So ये जो क्वेश्चन जैसा फ्रेम हो रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जो 45 डिमेंशनल फॉर्मूलाज जो आपके बुक में दिया गया है उसी में से फ्रेम होगी क्वेश्चन. तो अगर वो 45 लर्न है तो ऑटोमेटिकली आप इसमें इसकी डिमेंशनल वैल्यूज डाल सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको वो लर्न नहीं है, बाहर नहीं है, यू नॉट बी एबल टू डू इट. So there are many more examples we can try. जितने भी equations आएगा वो आप ट्राई कर सकते हैं. जितने भी फिजिक्स में इक्वेशन है, जो टेम्परेचर, एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी है ना, लाइट का इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सबको इन्वॉल्व नहीं कर रहा. बाकी ये 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसी को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे मास, लेंथ, टाइम. तो उससे बना हुआ जो भी इक्वेशन आपने अभी तक 9th 10th वगैरह में सीखा, वो यहाँ पर आप डाल के देख सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. ओके, सो वी हैव द सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज and unknown constants. So yeah, unknown physical quantities or constants. So suppose there is a physical quantity like this, velocity is equal to where v is velocity, t is time, a comma b comma c are constants. क्वेश्चन में इतना गिवन है. So this is what is given already in the question. v is equal to at plus
b upon t का square minus ct, where v is velocity, t is time, a, b, c are constants. Then the question is find the dimensions of these constants a, b, c. a, b, c का dimensions find करो. So dimension of v क्या होगा? Velocity का m0 l1 t minus 1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड. So l1 t minus 1. और यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना. सो ए टी का जो डायमेंशन है ए इंटू ए का डायमेंशन इंटू टी का टाइम है, तो टी हो गया. सो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐड होगा तब, क्योंकि इन तीनों का डायमेंशन सेम होगी. फिर इनको ऐड करने के बाद जो डायमेंशन आएगी वो भी यही आएगा. सो इन चारों का डायमेंशन सेम होना चाहिए. सो v का डायमेंशन, सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस से आप लिख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at, and then you can easily calculate here dimension of v हो गया l1 t minus 1 is equal to at. a का तो डायमेंशन पता नहीं है और t का डायमेंशन t है. सो a का डायमेंशन हुआ l1 t minus 1 upon t, and the final answer of a is l1 t minus 2. ठीक है. और यहाँ पर ये टी का जो है एक्सेलरेशन जैसा ही डायमेंशन आया, तो एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा था. ओके. और अगला b अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन, वो भी v से इक्वल होना चाहिए. सो b और टी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया t का पावर 2 l1 t minus 1. सो b का डायमेंशन होगा l1 टी स्क्वायर उधर चले जाएगा, तो t की पावर -1 + 2, -1 + 2 तो +1 हो जाएगा. सो l1 t1, सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ p. एंड यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ct also, because the dimension of ct also must be equal to dimension of v. So you will get here so again it will same as this acceleration, मतलब a, because l t1 t minus 1 और c का c है, t का t है, तो t डिवाइड हो जाएगी, तो c का जो डायमेंशन आएगा l1 t minus 2, that is the dimension of c, dimension of a and dimension of b. so ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि एडिशन में डिमेंशंस ऐड होके कोई नया चीज नहीं बनता, वही चीज बनता है. क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर 3 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के साथ ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बनेगी, 5 सेंटीमीटर ही बनेगी, है ना. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर गिव्स 5 सेंटीमीटर. द यूनिट्स आर सेम. So the unit of this quantity is equal to unit of this quantity is equal to unit of this quantity. So that is what actually we are doing as the principle of homogeneity of equation dimension. So let's go for another question here. Let's go for another question here. To find the dimensions, force, where F is force, X is
पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, F is displacement and T is time. Find dimensions of A, B, C, D. The constants. So find the dimensions of A, B, C, D. तो इसका मतलब A, B, C, D का डायमेंशन आपको पता नहीं है. So बाकी सबका पता है, बाकी सबका बारे में दे रखा है. फोर्स F फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम. तो सबसे पहले सबका डायमेंशन लिख लेते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है. F का डायमेंशन आएगा X का डायमेंशन इंटू T का डायमेंशन डिवाइडेड बाई A का डायमेंशन. सॉरी, F का डायमेंशन तो अपन को पता है पहले से, M1 L1 T माइनस 2 और XT अपॉन A का डायमेंशन आएगी X का डायमेंशन L1 T का डायमेंशन T1 और A का डायमेंशन नहीं पता. B X स्क्वायर का डायमेंशन, B का डायमेंशन B X स्क्वायर का L2 डिस्प्लेसमेंट है. और सी टी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन सी, टी का डायमेंशन T1, डी अपॉन टी का डायमेंशन, डी का डायमेंशन डी और टी का टी डिवाइडेड बाय टी. सो हम जानते हैं सारे डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. तो इसमें प्योर जो डायमेंशन अपन को पता है वो फोर्स का ही है, तो फोर्स को सबसे इक्वल कर देंगे तो अपने आप डायमेंशन का अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन आ जाएगी. सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5. सो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, या अब इसको 1 2 3 4 लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं. सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. सो डायमेंशन ऑफ S मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M XT अपॉन A. तो फिर आप इसका वैल्यू ले सकते हैं M1 L1 T माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू L1 T1 अपॉन A. तो इन सब का जो डायमेंशन है A का डायमेंशन जो आएगी, A का डायमेंशन जो आएगा, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू ये उधर चले जाएगी, ये सब डिवाइड में आ जाएगा. तो L1 T1 डिवाइडेड बाय M1 L1 T minus 2. So the final answer for the dimension of A is M minus 1, L1 L1 cancel, T plus 2 उधर जाएगा तो T plus 3. So the dimension is M minus 1 L3. And आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो F dimension of F must be equal to dimension of BX square. So dimension of F होता है M1 L1 T minus 2, M1 L1 T minus 2 must be equal to B into X square का L2. So B जो है ये L2 डिवाइड में आ जाएगी, तो M1 L2 डिवाइड में आएगा तो L minus 1 T minus 2. So that is the dimension of B. L2 डिवाइड में आएगी -2, तो -2 चले जाएगा तो 1 -2 -1 होगी. और अगला है C. सो F का डायमेंशन जो है वो सी टी के डायमेंशन से भी इक्वल कर सकते हैं आप. तो F का डायमेंशन हुआ भाई M1 L2 T minus 2, sorry M1 L1 T minus 2, और C का डायमेंशन C है, तो T का डायमेंशन T1 है. तो ये T1 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगी, तो C का डायमेंशन हुआ M1 L1 T minus 3. It's the dimension of C. So you can easily find out it even by yourself. तो इस तरह आप इसका सबका डायमेंशंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं. और सबसे लास्ट वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सबसे लास्ट वाला है CT का डायमेंशन F का M1 L1 T minus 2 है, that must be equal to dimension of C and T.
तो t का डायमेंशन t1 है, तो c का डायमेंशन हुआ t1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 l1 t-2 और +1 क्या मिलेगा -1. So this is the dimension of D. Sorry, dimension of D. So this is how we have to find the dimension of unknown, physical quantity or unknown constants. So there are even physical quantity which are dimensionless. There are even constants which are dimensionless. For example, if I say suppose kinetic energy is equal to half mv square plus amgh. Suppose there is a question like this, and you go for the dimension of K is energy m1 L2 T-2. Dimension of half mv square, it is okay. This is also m1 L2 T-2 because L1 T-1 the square. L1 T-1 the square because half does not have any dimension. So that's a dimension here. And AMGH. So the question is find the dimension of A. So dimension of A into M1 L1 T-2 is G and H is L1. So we will be calculating this to find the dimension of A. So find the dimension of E using this. So dimension of K must be equal to dimension of AMGH. Dimension of K is M1 L2 2 T-2 और AMGH का M1 L2 T-2. So this will get cancelled and A is what? No dimension. So we have to write here A is dimensionless. A is dimensionless. So these are the few important methods of dimensional analysis. So the first method or the first application of dimensional analysis we learned to check the correctness of an equation, and the second is to find the dimension of an unknown physical quantity or dimension of a constant. So there are two more applications. One is to derive formula if the dependency is given, and the fourth application is to convert one system of unit into another system. Like you can convert from CGS to MKS. Yeah, you can convert from an imaginary system to another imaginary system. Yeah, a SI system to an imaginary system, and otherwise an imaginary system to an SI system. So that's all about this part 1 video. In part 2 video we will be learning the